Good afternoon, all of you. थर्टीन्थ अक्टोबर रु 19th अक्टोबर 2025 जाए आज आम ओडिशा स्पेसिफिक वीकली करंट अफेयर्स कवर करिबा. As usual, first we will solve the previous sessions MCQ with answer and brief explanation. सेशन टी स्टार्ट करिबा पूर्वरु समस्ते थरे चेक कर दियंतु ऑडियो एंड स्क्रीन रे वीडियो क्लियर अछि कि नाही and tell me in the live chat, then we will proceed. ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आसुची कि नाही समस्ते आगे मते कहि दियंतु if the audio and video both are clear or not. क्लियर अछि ऑडियो वीडियो दीटा जाको जदि क्लियर अछि प्लीज लेट मी नो. ओके आपन को जहाँ भी कोर्स अवेल करिवार अछि फॉर प्रिलिम्स एंड मेंस स्क्रीन ऊपर दिया जाइथिबा नंबर रे आपन कोर्स अवेल करि परिबे. एंड सेशन रे जहाँ भी पढ़ा हबो जहाँ भी स्लाइड्स आपन ताको डाउनलोड करि परिबे तार पीडीएफ वर्जन. Okay, after this class by clicking the link in the comment section for your revision purposes. First आमे आज कोन कोन टॉपिक्स डिस्कस करिबा ताकु थरे देखि नबा. First GS2 रा दीटा टॉपिक अछि. UNICEF recognizes Odisha's efforts to curb child marriage. Then second topic is Amo Suvahak scheme, interest free taxi loans for women in Odisha. General studies paper 3 रो किछिटा टॉपिक्स अछि. Ecological crisis at Gahirmatha Marine Sanctuary, tripartite agreement for clean energy transition in Odisha. Then Odisha Fire Services and GLCF join hands for personal health awareness. Odisha plans additional 5 kg rice under PDS. Odisha holds stakeholder meeting on draft energy code. Push for climate resilient wash systems in Odisha. NIT Rourkela develops एगुड़ा भी GS3 रो topics. NIT Rourkela develops plant-based nanomaterial to combat antibiotic resistance. Keonjhar man develops human body sensor to check intrusion. West to Wealth initiative by Rourkela Steel Plant and NIT Rourkela. GRIDCO Gridco signs renewable energy banking agreements to boost Odisha's green energy transition. IIT Bhubaneswar and Indian Army sign MOU for research and emerging technologies. आउ गोटे miscellaneous topic अछि. Odisha Seva Ratna Samman 2025 honoring service and excellence. एतिकी टॉपिक आज आमे कवर करिबा. ता पूर्वरु प्रीवियस क्लास रे जहा एमसीक्यू मु एज अ टास्क प्रोवाइड करिथिली जो माने कमेंट सेक्शन रे आंसर करिथिले वेल एंड गुड. जो माने लाइव चैट रे भी बहुत जण आंसर करूथिले बट जो माने अटेंड करि नहांती से क्लास मु तांको आ गोटे एठी चांस देबी. आई विल गिव 10 to 15 seconds for each MCQ. Try to answer भूल हो पछे.
Try to answer in the live chat. Then we will discuss the correct answer and the brief explanation of it. ଆଉ ଯାହା ଯାହା ବି ଏବେ MCQ ମୁଁ ଏଠି discuss କରିବି ତାର डिटेल रे क्लासेस प्रीवियसली निया जाई सरची जो माने अटेंड करी नांदी से माने जाई कि प्रीवियस क्लास टी को आउथरे देखि परिबे रिकॉर्डेड सेशन ओके फर्स्ट क्वेश्चन कहला रिसेंटली रिसर्चर्स एट एनआईटी राउरकेला से माने कोन डेवलप करचंदी गोटे एआई बेस्ड मॉडल डेवलप करचंदी जोटा कि रोड सेफ्टी को फर्दर एनहांस करिवो बाय इंप्रूविंग व्हीकल कम्युनिकेशन इन वैनेट्स ओके which of the following statement about the initiative are correct जेतेबेले MCQ सॉल्व करिवे बहुत थर एमती क्वेश्चन रे देई थाए करेक्ट पचारथिबो नले बहुत थर पचारथिबो नॉट करेक्ट बहुत जणे ए नॉट टा को इग्नोर कर दियंती जल्दी जल्दी रे तो आपनकर कांसेप्ट ठीक थिले भी नेगेटिव मार्किंग हे जिवो सो क्वेश्चन सब बेले सिंसियरली पढुतिबे फर्स्ट स्टेटमेंट कोन देला The model uses multi-agent deep reinforcement learning to optimize message timing between the vehicles. Second statement कहिछि कि ए जो particular initiative जहाँ भी AI based model develop करा जाइछे तार गोल होउछि to reduce congestion and message delays in vehicular ad hoc networks जहाँ को VANETs भी कुआ जाउछि. The system allows vehicles to prioritize messages based on urgency and context. Model टी एक्सक्लूसिवली मिलिटरी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पे यूज करा जाइछि करेक्ट आंसर पचारछि 1 2 3 2 and 4 ओनली 1 and 4 ओनली किबा ऑल ऑफ द अबव 1 2 3 4 सब जगह ठीक हबो कोन हबार आंसर आई एम गिविंग यू 15 सेकंड्स क्वेश्चन टिके लेंदी अछि सो आई एम गिविंग यू 15 सेकंड्स टू आंसर करेक्ट आंसर इज ए 1 2 and 3 फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट अछि एबे हमें देखिबा फर्स्ट तीनटा स्टेटमेंट करेक्ट अछि काहे कि ना मु प्रीवियस क्लास रे एगुडा डिटेल्स रे डिस्कस करछि एज इट इज कि ए जो मॉडलटा एआई बेस्ड मॉडलटा ये पर्टिकुलरली ए टेक्नोलॉजी को यूज करछि मल्टी एजेंट डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग टू ऑप्टिमाइज कम्युनिकेशन इन व्हीकुलर एड हॉक नेटवर्क्स जहा को वैनेट्स कहउछंती आ तार एम होछि कि कंजेशन टा से रिड्यूस करिवो एंड अर्जेंट मेसेजेस को प्रायोरिटाइज करिवो स्टेटमेंट 4 एथिपाई कि इनकरेक्ट अछि काई ना जो सिस्टम टा एटा एक्सक्लूसिवली मिलिटरी यूज पई करा जाई नाही इट इज डिजाइन्ड फॉर जनरल रोड सेफ्टी एंड इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा द छत्तर यात्रा recently celebrated in Kolahandi district of Odisha is associated with which of the following features first एटा कहला कि ए जो यात्राटा it is held in order of goddess Manikeshwari during Durga Puja महाअष्टमी सेकंड स्टेटमेंट कहिछि कि ए जो फेस्टिवल टा एटा गोटे ट्राइबल रॉयल और फोक ट्रेडिशन रो गोटे ब्लेंड बा अमालगमेशन कहिया को गले एनिमल सैक्रिफाइस गोटे की रिचुअल ए फेस्टिवल रे despite repeated administrative appeals against it. Fourth statement कहिछि it is mainly celebrated in the temple town of Puri. Correct answer कोन हबो 1 2 3 only or 2 and 4 only 1 and 4 only or all of the above. I am giving 10 seconds. करेक्ट आंसर इज 1 2 and 3 फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट अछि काहेकि ना छत्तर यात्रा मु आगरु एटा डिस्कस करछि एटा कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट रे सेलिब्रेट हुए महाअष्टमी रे सेलिब्रेट हुए इन ऑनर ऑफ गॉडेस माणिकेश्वरी सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट अछि काहे ना एटा गोटे यूनिक ब्लेंड ऑफ ट्राइबल रॉयल एंड फोक ट्रेडिशंस
देन स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट अछि एनिमल सैक्रिफाइस एटा गोटे प्रोमिनेंट रिचुअल ए फेस्टिवल रे बट स्टेटमेंट 4 इनकरेक्ट अछि कि जेहेतु मु एबे कहिली कि एटा कलाहांडी रो गोटे फेस्टिवल इट इज सेलिब्रेटेड इन भवानीपाटना नॉट इन पुरी तो ए प्लेसटा एठी रॉन्ग दे देला समस्ते ए आंसर करछन्ती वेरी गुड जो माने भी ए एठी आंसर करछन्ती नेक्स्ट क्वेश्चन recently Odisha launched its first dedicated birding trail in Debrigad Wildlife Sanctuary. Which of the following statements about the initiative are correct? First, the trail is located in Bargarh district and runs partly along the Hirakud West wetland. Second statement कहिछि ए जो sanctuary टी एठारे 340 bird species कर एटा home throughout the year. The initiative aims to promote bird conservation, ecotourism and public awareness. Only trained ornithologists are allowed to access the trail due to its sensitive ecological nature. केवल trained ornithologist मानकरो एठी allow करा जाउछि to access the trail. Answer कोन हबो 1 2 and 3 only, 2 and 4 only, 1 and 4 only, all of the above. Correct answer is A. 1, 2 and 3 only. Statement 1 correct अछि काइना birding trail सेटा located अछि Debrigad Wildlife Sanctuary रे Bargarh district रे जोठी located and runs partly along the Hirakud wetland. Second statement भी correct अछि काइना ए जो sanctuary रे it hosts over 340 bird species year round including residents and migratory birds. स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट अछि काइना जो इनिशिएटिव टा से बर्ड कंजर्वेशन इकोटूरिज्म एंड पब्लिक एंगेजमेंट को प्रमोट करे इन बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन. स्टेटमेंट 4 इज इनकरेक्ट काइकि ना ए जो ट्रेल टी केवल ट्रेन्ड ऑर्निथोलॉजिस्ट मानको पई नुह इट इज ओपन टू द पब्लिक. So Sridhar Konhar कहउचंदी A it is correct answer. A is the correct answer. 1 2 and 3 only. It is open to the public, not restricted only to the trained ornithologists. Okay. Now we will start the current affairs session. इठी एटा नोट करिवे एटा GS3 environment रो टॉपिक टा and it is relevant for both prelims and mains. Okay, कोन कहिछि न्यूज रे इकोलॉजिकल क्राइसिस at गहिरमठा माराइन सैंक्चुरी. न्यूज रे कोन पई अछि जो गहिरमठा माराइन सैंक्चुरी कोडी एटा लोकेटेड केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट ओडिसा रे एंड इट इज नोन एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट. एटा मने रखिबो गहिरमठा माराइन सैंक्चुरी एटा होछि वर्ल्ड रो लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट कहार ऑलिव रिडली सी टर्टल्स मानकर जोटा कि एबे गोटे इकोलॉजिकल क्राइसिस फेस करूची कोथि पई pollution, illegal trawling, habitat degradation and weak administrative enforcement पई कि. तो जो कंजर्वेशनिस्ट माने अछंती से माने तांकर एटा डर कि सी आकु रिवर्स ए जो इकोलॉजिकल क्राइसिस ता सेठी कंटिन्यू होची आकु रिवर्स करबा को डेकेड्स लागि जिवो. ओके, इन प्रोटेक्टिंग द वल्नरेबल स्पीशीज. Olive ridley sea turtle एमाने होचंती स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट of all the sea turtles. एमान को जाना जाए कहीं ना एमाने मास नेस्टिंग करंती जोटा को अरिबाडा भी कहा जाए जो थिरे बहुत गुडे thousands of this specific kind of turtles जहा को olive ridley sea turtle कहा जाए से माने आसी कोन करंती गोटे सिंगल बीच को आसंती and they lay eggs there. आउ तांको प्रोटेक्ट करा जाय छि तांकर प्रोटेक्शन स्टेटस कोन शेड्यूल 1 रे तांको रखा जाय छि ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. ऑलवेज रिमेंबर जेतेबेले भी न्यूज रे किछि स्पीसीज विषय रे न्यूज आसुची कि करंट अफेयर्स रे कवर करचंदी कि निजे भी कवर करूचंदी ऑलवेज नोट डाउन देयर प्रोटेक्शन स्टेटस. शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 साइट्स अपेंडिक्स
वन एंड आईयूसीएन रे तांकर स्टेटस वल्नरेबल अछि। बैकग्राउंड कोन गहिरमठ मराइन सेंचुरी एटा एस्टैब्लिश हेतला 1997 रे आ एटा भितरकनिका नेशनल पार्क रु अलगा हेके एटा एस्टैब्लिश हेतला। इट वाज कार्व्ड आउट ऑफ द भितरकनिका नेशनल पार्क। एतिकी स्क्वायर किलोमीटर ये कवर करे जोटा कि 1435 स्क्वायर किलोमीटर विथ ओनली 27 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ टेरेस्ट्रियल एरिया। टेरेस्ट्रियल एरिया आरो बहुत कम, मेजॉरिटी होची मरीन एरिया। प्रति वर्ष 4 to 5 lakhs ऑलिव रिडली टर्टल्स से माने कोन करंती से माने आसंती एंड दे नेस्ट अलोंग द कोस्ट। से माने कोस्ट रे एग्स ले करंती प्राइमरीली फ्रॉम नवंबर रु मे भितरे से माने आसंती। The olive ridley is listed as vulnerable. एठी मु जस्ट मेंशन कली IUCN रेड लिस्ट रे and 1 in 1000 hatchlings survives to adulthood, making conservation efforts critical. Marine protected area MPA एडा कोन किछिटा एबे आमे की टर्म्स डिस्कस करिबा तार मीनिंग कोन जोटा कि आमे रिपीटेडली एबे रिपीट करिबा थ्रू आउट द डिस्कशन। एटा होची गोटे ओशन डेजिग्नेट ए सेक्शन ऑफ द ओशन डेजिग्नेटेड फॉर कंजर्वेशन पर्पसेस। ओशन रो गोटे एमिति एरिया जोटा कि कंजर्वेशन पर्पस पई कि डेजिग्नेट करा जाई छै ताकू कुआ जाय मरीन प्रोटेक्टेड एरिया। गहिरमठ इज अ मरीन सैंक्चुरी जोटा कि गोटे हाईएस्ट लेवल प्रोटेक्शन अंडर द इंडियन लॉ। गिल नेट्स कोन एडा होची फिशिंग नेट जोटा कि मरीन एनिमल्स माननकू ट्रैप करबा को यूज करा जाय बाय देयर गिल्स। बैंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज ए जो गिल नेट्स गुडा प्रोटेक्टेड एरियाज रे आंकु बैन करा जाय छी काहे कि ना माने इनडिस्क्रिमिनेटली जो स्पीसीज मान को टारगेट करिबा कथा भी नुह से माने तांकु भी टारगेट करके कैच करूचंती ऑल इन ऑल्सो एंड इट आल्सो इंक्लूड्स द टर्टल्स। इश्यूज कोन रही छै कोन इकोलॉजिकल थ्रेट इकोलॉजिकल क्राइसिस ए पर्टिकुलर मरीन सैंक्चुरी फेस करूची एबे। फर्स्ट ऑफ ऑल के मरीन पोल्यूशन समस्त जानथि प्लास्टिक वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट एगुडा जो नियर बाय एरियाज रु आसुची दे आर पोल्यूटिंग द सी एंड श्रिम्प एक्वाकल्चर डिस्चार्जेस untreated wastewater leading to destruction of the seaweed beds, rise in jellyfish populations and collapse of the local marine food chains. Habitat loss होची काइना coastal erosion होची जोड़ा कि traditional nesting grounds को wipe out करूची। अगर नसी island has already submerged एटा गोटे एग्जांपल हिसाब रे नहीं परिवे। Beaches like Nasi, Babubali and Ekakula are shrinking. A new beach near Saptabhaya has emerged offering potential as a future nesting site. किंतु एटा को एबे सेमती 100% श्योर नाही माने भाबु चंदी कि एटा गोटे पोटेंशियल नेस्टिंग साइट प्रूव हे परिबो आफ्टर गहिरमठ मरीन सैंक्चुरी। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एनफोर्समेंट फेलियर्स भी रही छी जोथि पई कि क्राइसिस फेस करूची पर्टिकुलर सैंक्चुरी। फॉरेस्ट पेट्रोल बोट्स सेगुडी को नॉन फंक्शनल अछि। मरीन पुलिस स्टेशन दे आर अंडरस्टाफ्ड एंड पुअरली इक्विप्ड। कोऑर्डिनेशन विथ द कोस्ट गार्ड इज इनकंसिस्टेंट कोस्ट गार्ड सहित कोऑर्डिनेशन एते भलो नाही। हाई स्पीड पेट्रोल वेसल्स नाहंती टू इंटरसेप्ट द जोड़ा कि इलीगल फिशिंग बोट्स तांकू इंटरसेप्ट करि परिबो तांकू रोकी परिबो। टर्टल मोर्टालिटी प्रति वर्ष 1000 turtles they die due to illegal fishing especially by being trapped in the gill nets. Advantages of the sanctuary sanctuary रा advantage कोन कि एटा olive ridley sea turtles माने जो रहिले तांकर सर्वाइवल पई के sanctuary टा बहुत क्रिटिकल एट अ ग्लोबल स्केल एंड आउ जो बाकी मरीन बायोडाइवर्सिटी रहिला it supports the diverse marine biodiversity including the endangered species काइना केवल turtles माने नुहंती अलगा species माने भी अछंती तांको सपोर्ट करिबा पई तांकर प्रोटेक्शन पई जो बाकी एंडेंजर्ड स्पीसीज रहिले यूनिक मरीन इकोसिस्टम रहिला ताकू प्रोटेक्ट करिबा पई हैज इकोटूरिज्म पोटेंशियल इफ डेवलप्ड एज एन एनवायरमेंटली रिस्पांसिबल way forward what should be the way forward or way ahead and what should be the solution कि आमे ए इकोलॉजिकल क्राइसिस को गोटे सर्टेन अमाउंट रे
आकु रिड्यूस करि परिबा फर्स्ट स्ट्रेंथन द एनफोर्समेंट मेकानिजम्स को स्ट्रेंथन करिबा जेमति कि जो पेट्रोल बोट्स रहिले तांको से माने एबे नॉन फंक्शनल अछंती बहुत गुडे नॉन फंक्शनल अछंती तो तांको रिपेयर करा जाऊ देन डिप्लॉय करा जाऊ अंडर स्टाफ एबे जो कंडीशन अछि इंक्रीज करा जाऊ स्टाफ्स एट मरीन पुलिस स्टेशंस deploy high speed vessels and use drone surveillance जो इलीगल फिशिंग होची एंड गिल नेट्स रो यूज होची तो हाई स्पीड वेसल्स डिप्लॉय करा गले और ड्रोन सर्विलेंस करा गले ताको रिड्यूस करी हबो टाइटर कोऑर्डिनेशन करा जाऊ विथ द इंडियन कोस्ट गार्ड कंट्रोल पोल्यूशन सोर्सेस स्ट्रिक्ट नॉर्म्स एनफोर्स करा जाऊ ऑन श्रिम्प फार्म्स एंड इंडस्ट्रीज जोड़ा की कोस्ट पाखापाखी सिचुएटेड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जिते भी रहिला ताकू भल भाबरे इंप्लीमेंट करा जाऊ अलोंग द कोस्टल बेल्ट restore nesting habitats conduct scientific studies to stabilize and restore the eroded beaches जो बीच गुड़ा ऑलरेडी eroded हेई सारचंती बा जो गुड़ा shrink करूचंती तांको ऊपर scientific study करा गले सेमान को केमिति restore बा stabilize करा जाई परिबो तार गोटे solution बाहर के आसीबो promote new nesting sites like the सप्तभाया beach restore nesting habitats conduct scientific studies okay eta repeat heichi promote nesting sites like the satabhaya beach then community awareness how involvement को बढ़ावा दिया जाऊ conduct outreach programs for fishermen and coastal residents involve local communities in turtle protection and monitoring technology को use करा जो जेमति gps tagging हे गला turtles मान को पई and digital surveillance हे गला of nesting sites एठी हमें प्रीलिम्स पॉइंटर्स कौन कौन उठेबा रेलेवेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि गहिरमठा सैंक्चुरी तार लोकेशन एटा ओडिसा रे लोकेटेड अछि एंड इट वाज अ पार्ट ऑफ भितरकानिका नेशनल पार्क ऑलिव रिडली सी टर्टल रो तांकर प्रोटेक्शन स्टेटस कोन वल्नरेबल ए माने आईयूसीएन रेड लिस्ट रे वल्नरेबल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 रे ए माने दे वर लिस्टेड अंडर द शेड्यूल 1 एंड साइट्स रो अपेंडिक्स 1 रे ए माने लिस्टेड नेस्टिंग सीजन आंकर केबे नवंबर रु मे यूनिक फीचर कौन कि माने मास नेस्टिंग करता जोड़ा को आरिवाड़ा कह जाए वेरी इजी क्वेश्चन एटी स्क्रीन रे एटी मु शो करूची गहिरमठ माराइन सैंक्चुरी इज प्राइमरीली नोन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ व्हिच मरीन स्पीसीज एबे मल्टीपल टाइम्स डिस्कस हे सरलानी एंड आई होप समस्त एटी लाइव चैट रे करेक्ट आंसर देबे फर्स्ट हम्पबैक व्हेल्स second olive ridley sea turtles then gangetic dolphins then dugongs को आउ कोन को जाय sea cow आंसर कोन हबो giving you 10 seconds very easy question करेक्ट आंसर जे एठी दउचंती बी आंसर हबो ऑलिव रिडली सी टर्टल्स नेक्स्ट आमे जिबा ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट फॉर क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन इन ओडिसा जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स रो टॉपिक प्रीलिम्स मेंस बोथ पई एडा रेलेवेंट न्यूज रे कोन पई अछि कि गोटे ट्राइपार्टाइट स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट एटा साइन हेची कहा कहा भीतर साइन हेची फर्स्ट द नीति आयोग देन गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एंड इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ आईएसईजी फाउंडेशन ए तीनटी तीन जनक भीतर गोटे ट्राइपार्टाइट स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन हेची and this agreement marks major step towards clean sustainable cost effective energy transition in Odisha आउ ये जो इनिशिएटिव टा एटा ओडिसा रो जो ब्रॉडर डेवलपमेंट विजन रहिला विकसित ओडिसा 2036 एंड 2047 तार गोटे पार्ट
फर्स्ट तो ये आम देखा कि क्लाइमेट फाइनेंस क्या कहते फंडिंग सोर्स domestically or internationally to support climate mitigation and adaptation जहार फंडिंग जोटा कि डोमेस्टिकली सोर्स हो बा इंटरनेशनली से फंड टा आसी थाउ किंतु से फंड टा कोथि पई लागिवो क्लाइमेट मिटिगेशन एंड क्लाइमेट अडाप्टेशन पई लागिवो ताको क्लाइमेट फाइनेंस कहउचंती जो फाइनेंस बा जो फंडिंग क्लाइमेट मिटिगेशन एंड अडाप्टेशन पई लागुची ताको क्लाइमेट फाइनेंस कहउचंती इट इंक्लूड्स ग्रांट्स ग्रीन बॉन्ड्स ब्लेंडेड फाइनेंस एंड प्राइवेट कैपिटल अलाइन्ड विथ द क्लाइमेट गोल्स बैकग्राउंड कोन ई इंडिया कोन एम करछि बे इंडिया रो एबे एम अछि कि से नेट जीरो एमिशन टारगेट 2070 बाय 2070 से अचीव करिवो विथ स्टेट्स प्लेइंग अ वाइटल रोल इन एनर्जी ट्रांजिशन तो ओडिसा गोटे रिसोर्स रिच स्टेट विथ कोल हेवी एनर्जी मिक्स तो सी एबे मूव करछि टुवर्ड्स क्लीनर एंड सेल्फ रिलायंट एनर्जी सिस्टम तो ए जो एग्रीमेंट ता साइन हेछि एटा एसेट रो गोटे पार्ट एसेट रो फुल फॉर्म हैला एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल स्टेट एनर्जी ट्रांजिशन ए एग्रीमेंट ता एसेट रो गोटे एसेट प्लेटफॉर्म रो गोटे पार्ट आउ ए प्लेटफॉर्म को लीड किए करे नीति आयोग लीड करे इन कोलैबोरेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ पावर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आउ एसेट सपोर्ट करे स्टेट्स मानन को इन बिल्डिंग कस्टमाइज्ड एंड सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन रोड मैप्स आउ ए जो एग्रीमेंट ता एबे साइन हेई जे इट इज अ पार्ट ऑफ एसेट एनर्जी ट्रांजिशन कहले हमें कौन बुझीथाउ एनर्जी ट्रांजिशन माने समस्त जानी परथिबे माने शिफ्ट गोटे जगह आउ गोटे जगह को मूव करबा कोठु कोठी के मूव करिवे फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सिस्टम रु रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल सोर्सेस को माने शिफ्ट करिवे मूव करिवे ट्रांजिट करिवे लाइक सोलर विंड हाइड्रो एंड बायो एनर्जी एगुडी को कोन एगुडी को होची रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी and it will involve improving energy efficiency, storage technologies and smart grid systems. Asset platform we briefly discuss कली कि एटा गोटे सेंट्रल प्लेटफॉर्म एंड लेड बाय नीति आयोग जोड़ा कि स्टेट मान को असिस्ट करूची एनर्जी प्लानिंग रे कैपेसिटी बिल्डिंग रे इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग रे पॉलिसी डिजाइन एंड रिव्यू रे एंड क्लाइमेट फाइनेंस को केमिति मोबिलाइज करिवे फॉर ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट एटा स्टेट मान को एथिरे भी सहायता करे ऑब्जेक्टिव कोन ए जो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट ता साइन हेची आरो ऑब्जेक्टिव कोन to develop and implement a strategic and cost effective energy transition roadmap for Odisha. Cleaner and more affordable power को promote करिबा then energy access को enhance करिबा through smart resilient transmission and distribution networks. Advanced energy technology को integrate करिबा like energy storage system, grid modernization, AI based energy management, climate finance को mobilize करिबा through strong institutional frameworks and partnerships. स्टेक होल्डर माने जो मानक भितरे ए एग्रीमेंट ता साइन हेची ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन हेची तांकर रोल कोन तांकर इंडिविजुअल रोल कोन नीति आयोग रो इंडिविजुअल रोल होची कि ये गाइडेंस एंड ओवरसाइट स्ट्रेटजी गाइडेंस एंड ओवरसाइट प्रोवाइड करिवो देन इंटर एजेंसी कोलैबोरेशन को फैसिलिटेट करिवो डिजाइन एंड पीरियोडिक रिव्यू को सपोर्ट करिवो कोथि पई इन द ट्रांजिशन रोड मैप देन गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा रो काम कोन रहइबो कि ये इम्प्लीमेंटेशन को लीड करिवो देन स्टेट डिपार्टमेंट को भितरे कोऑर्डिनेशन बनेइबो एंड इंश्योर करिवो डाटा अवेलेबिलिटी पॉलिसी एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करिवार काम होची गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा रो देन आईएसईजी फाउंडेशन रो काम कोन कि एटा गोटे टेक्निकल पार्टनर हिसाब रे काम करिवो आउ तार एक्सपर्टीज अछि एनर्जी सिस्टम प्लानिंग रे रिन्यूएबल एनर्जी स्ट्रेटजीज रे फ्रेमवर्क डिजाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग रे will establish an energy war room to track the progress को track करिया पई कि गोटे energy war room establish हबो गवर्नेंस स्ट्रक्चर सेंट्रल ओवरसाइट कमिटी गोटे कॉन्स्टिट्यूट हबो जहा को चेयर करिवे नीति आयोग रो सीईओ स्टेट स्टीयरिंग कमिटी को चेयर करिवे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा Committees will monitor the implementation, address the interagency challenges, provide policy support and direction. Advantages कोन ए इनिशिएटिव रो कि एटा ओडिसा रो जो डिपेंडेंसी रहउची फॉसिल फ्यूल ऊपर जेमति कोल हे गला ताकू रिड्यूस करिवो एंड नेशनल नेट जीरो गोल संगे ओडिसा को अलाइन करिवो एंड एनर्जी सिक्योरिटी को एनहांस करिवो सिटीजन मानक पई अफोर्डेबिलिटी को एनहांस करिवो जॉब क्रिएशन को प्रमोट करिवो इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स
गोटे रेजिलिएंट आउ मॉडर्न पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करिवो, ग्रीन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करिवो एंड क्लाइमेट फाइनेंस को भी अट्रैक्ट करिवो। चैलेंजेस कोन कोन रहउची? फर्स्ट ऑफ ऑल कि ट्रांजिशन करिवाटा एते सहज नुहे। ट्रांजिशनिंग फ्रॉम कोल इन अ रिसोर्स डिपेंडेंट स्टेट जेमती मु कहली कि ओडिशा एटा गोटे इकोनॉमिक रेजिस्टेंस फेस करि पारे। प्रथमे प्रथमे बहुत फंडिंग लगी पारे, जेमती हाई इनिशियल कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टोरेज सिस्टम्स, कैपेसिटी करिवा दरकार, बट ट्रेनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड द टेक्निकल पर्सनल, कोऑर्डिनेशन थिबा दरकार अक्रॉस द मल्टीपल डिपार्टमेंट एंड स्टेक होल्डर्स। वे फॉरवर्ड कोन? स्टेट लेवल पॉलिसी फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करा जाऊ एंड रेगुलेटरी मेकानिज्म को भी स्ट्रेंथन करा जाऊ फॉर एनर्जी ट्रांजिशन। कम्युनिटी एंगेजमेंट ऊपर फोकस करा जाऊ एंड वर्कफोर्स रीस्किलिंग व कैपेसिटी बिल्डिंग जो रहिला ट्रेनिंग ऑफ गवर्नमेंट एंड टेक्निकल पर्सनल इन ग्रीन जॉब्स ताको ऊपर फोकस करा जाऊ। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोबिलाइज करा जाऊ, ताको ऊपर फोकस करा जाऊ टू फाइनेंस द लार्ज स्केल रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स। डिजिटल टेक्नोलॉजीज लेवरेज करा जाऊ फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड एफिशिएंट एनर्जी मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमें देखिबा ओडिशा फायर सर्विसेज एंड द जीएलसीएफ जॉइन हैंड्स फॉर पर्सनल हेल्थ अवेयरनेस। जीएस3 हेल्थ अंडर रे आसीबो, प्रिलिम्स मेंस डेटा पय इंपोर्टेंट। न्यूज रे कोन पय अछि जो ओडिसा रो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज रहिला F&ES डिपार्टमेंट से गोटे एमओयू साइन करछि विथ गैस्ट्रो लिवर केयर फाउंडेशन जीएलसीएफ अंडर अ न्यू इनिशिएटिव कृतज्ञता। इनिशिएटिव टा मने रखिबे कृतज्ञता। आ जो कोलैबोरेशन तार पर्पस कोन कि जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर रहिला ताको प्रमोट करिबा एंड अवेयरनेस क्रिएट करिबा अबाउट लिवर हेल्थ अमंग द फायर सर्विस पर्सनल। मन रहिला एबे जदी एग्जाम रे आसीबो कृतज्ञता इनिशिएटिव ऊपर तो तार पर्पस समस्ते आइडेंटिफाई करि परिबे। देन व्हाट इज द बैकग्राउंड कि जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस पर्सनल रहिले से माने एक्सट्रीम फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस से माने डे टू डे फेस करंती इन देयर लाइन ऑफ ड्यूटी। सो द हेल्थ इश्यूज स्पेशली लिवर डिजीज तांकर जदी थिबो भी ना दे ऑफन गो अनडायग्नोस्ड, डायग्नोस हेई पारेनी ड्यू टू asymptomatic nature in early stages, identifiable नुह सेटा एते in early stages, so it goes undiagnosed। आ जो एबोयू टा साइन हेजी it is a part of Odisha Fire Service commitment to occupational health and safety। The MOU was signed at the Fire Training Center in the presence of DG Fire Services। These are not important, just for the understanding, DG Fire Services, DIG and GLCF trustee and gastroenterologist Dr. Manish Kumar Sahu. Name are not important. Just remember these three statements। किछि रेलिवेंट कॉन्सेप्ट हमें एठी एक्सप्लेन करिबा। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर कोन? एटा गोटे मेडिकल अप्रोच जोटा कि अर्ली डिटेक्शन ऊपर फोकस करे एंड प्रिवेंशन ऊपर फोकस करे ऑफ डिजीजेस रादर देन ट्रीटिंग देम आफ्टर ऑनसेट। डिजीज हेई गला परे नुह ता पूर्वरु केमिति डिजीज को हमें प्रिवेंट करि परिबा ताको कुहा जाय प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। सो इट इज अ मेडिकल अप्रोच ऑफ अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। तो एथिरे इंक्लूड कोन करा जाय डिटेक्ट करबा को रेगुलर स्क्रीनिंग, हेल्थ चेकअप्स, वैक्सीनेशंस एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ऑक्यूपेशनल हेल्थ कोन? ऑक्यूपेशनल हेल्थ होची एटा गोटे पब्लिक हेल्थ रो गोटे ब्रांच। ऑक्यूपेशनल हेल्थ जोटा कि फिजिकल एंड मेंटल वेलबीइंग संगे डील करे। इट इज कंसर्न्ड विथ द फिजिकल एंड मेंटल वेलबीइंग ऑफ द ऑफ वर्कर्स। एटा पर्टिकुलरली इंपोर्टेंट इन हाई रिस्क प्रोफेशनल्स लाइक फायर फाइटिंग एंड इमरजेंसी सर्विसेज। लिवर हेल्थ अवेयरनेस केते गोटे लिवर डिजीज अछि जेमति कि फैटी लिवर हैला, हेपाटाइटिस हैला, सिरोसिस हैला, often remain silent in early stages। जेमति कि तांकर early stages रे से माने diagnose हेई पारंती नाही, they often go undiagnosed। तांको identify करा जाई पारे नाही, so they remain silent in early stages। Regular screening and awareness can foster within the firefighting community। पार्टिसिपेशन जोटा हेतला जो लॉन्च हेतला इनिशिएटिव टा से पार्टिसिपेशन रे 43 सब ऑफिसर ट्रेनीज थिले, 29 पर्सनल थिले फ्रॉम नागालैंड फायर सर्विसेज, सीनियर ऑफिशियल्स थिले एंड ए जो इनिशिएटिव टा एटा इट इज बीइंग हेल्ड एज अ मॉडल फॉर इंस्टीट्यूशनल हेल्थ रिस्पांसिबिलिटी।
advantage कौन है initiative रो कि early detection possible हबो of health risks among the personnel, then overall wellness, morale and productivity बढ़िबो, health centric HR practices एटा गोटे set करिबो गोटे president for health centric HR practices in other uninformed services, public private collaboration को promote करा जिवो in health sector, way forward आउ कौन हबा दरकार to further strengthen the results of the initiative कि ये प्रोग्राम टी को एक्सटेंड करा जाऊ टू अदर रीजन्स एंड सर्विसेज अक्रॉस ओडिशा, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग को इनकॉर्पोरेट करा जाऊ एज अ पार्ट ऑफ वेलनेस इनिशिएटिव, देन हेल्थ डाटा मॉनिटरिंग सिस्टम्स को इंटीग्रेट करा जाऊ इनटू एचआर एंड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, encourage similar partnerships in police, disaster response and civil defense services. Clear? Next, Odisha plans additional 5 kg rice under PDS. GS paper 3 economics रा topic prelims mains दीटा पे important. News रे कौन पाई रहिला कि जो ओडिशा गवर्नमेंट सी एबे प्लान करूची कि to provide additional 5 kg of rice per person per month under the PDS public distribution system. आउ ये जो मूव टी आर पर्पस बा एम कौन टू स्ट्रेंथन द फूड सिक्योरिटी फॉर द स्टेट्स 3.5 करोड़ बेनिफिशियरीज. आउ जो फाइनल डिसीजन टा सेटा चीफ मिनिस्टर नेबे अकॉर्डिंग टू फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर वेलफेयर मिनिस्टर कृष्णचंद्र पात्र. बैकग्राउंड कौन करेंटली एबे कौन चलछि एबे 5 kg राइस पर पर्सन पर मंथ दिया जाउछि अंडर पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एज पर द एनएफएसए 2013 नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 एबे 5 kg दिया जाउछि. जो बेनिफिशियरीज माने रहिले अंत्योदय अन्न योजना, प्रायोरिटी हाउस होल्ड कैटेगरी. ओके तो एमिदे बहुत फैमिलीज अछंदी जो मानको पई 5 kg टा इनसफिशिएंट काहेकि ना जो जॉइंट फैमिली बा लार्जर हाउस होल्ड्स रहिले और फूड इनसिक्योर रीजन्स रहिला ताको पई 5 kg इट इज स्टिल इनसफिशिएंट. तो ए जो प्रपोजल टा आसी जी इट कम्स एट अ टाइम व्हेन फूड इन्फ्लेशन एंड रूरल डिस्ट्रेस आर की पॉलिसी कंसर्न्स. किछि रेलेवेंट कांसेप्ट एटी एक्सप्लेन हे जी. फर्स्ट ऑफ ऑल के हमें ऊपर देखिले गोटे टर्म मेंशन हे जी पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. एटा कोन एटा गोटे गवर्नमेंट रन फूड सिक्योरिटी सिस्टम जे कि सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करे जेमति राइस हला व्हीट हला बा कोर्स ग्रेन हला पुअर पीपल मानकू. आउ ए जो पीडीएस सिस्टम टा कहा अंडर रे ऑपरेट करे इट ऑपरेट्स अंडर द एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. एडी मु जस्ट मेंशन करिछि एडी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अंडर रे ऑपरेट करे which covers 75% of rural population. rural population रो 75% से कवर करे and urban population रो 50% कवर करे. आउ एटा को इम्प्लीमेंट किए करे जॉइंटली एटा सेंटर एंड स्टेट बोथ द्वारा जॉइंटली एटा इम्प्लीमेंट हुए. ई केवाईसी कौन इलेक्ट्रॉनिक नो योर कंज्यूमर. एटा गोटे डिजिटल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोसेस जो थे कि आधार को एंड अदर गवर्नमेंट आईडी को यूज करा जाए. आवर एम कौन ई केवाईसी यूज करिवार एम कौन टू एलिमिनेट फेक डुप्लिकेट एंड इनएलिजिबल बेनिफिशियरीज फ्रॉम वेलफेयर स्कीम्स. आउ एडा मैंडेटरी फॉर कंटिन्यूड एक्सेस टू सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स अंडर पीडीएस. एडा मने रखिबे कि पीडीएस अंडर रे जदी सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स दरकार ताहले ई केवाईसी होची मैंडेटरी. की फीचर्स कौन है जो प्रपोजल रो कि एडिशनल 5 kg राइस पर पर्सन पर मंथ तो दिया जिवो. टेकिंग एबे कौन अछि 5 दिया जाउची तबरे आउ 5 दिया जिवो कौन है जिवो 10 kg पर पर्सन पर मंथ. जो समस्त 3.25 करोड़ पीडीएस बेनिफिशियरीज रहिले से मानको समस्त को कवर करा जिवो. एंड डिसीजन टा एबे पेंडिंग अछि. चीफ मिनिस्टर अप्रूव कले डिसीजन टा फाइनली सेटा लागू हबो. intended to address household level food shortages and nutritional needs. advantage कोन proposal रो कि food security improve होबो, vulnerable household मानको तांको help मिलिबो. IIT Bhubaneswar and Indian Army sign MOU for research and emerging technologies. GS paper 3
साइंस एंड टेक रो डिविजन एसडीडी ऑफ इंडियन आर्मी माने आईआईटी भुवनेश्वर एंड इंडियन आर्मी भितर गोटे एमओयू साइन हेइचे एंड एमओयू टा आंकर जो कोलैबोरेशन टा रहिला कहा ऊपर फोकस करिवो एम बा पर्पस कोन research innovation and training in emerging technologies such as augmented reality virtual reality artificial intelligence robotics ए जो कोलैबोरेशन टा एई मानको ऊपर रिसर्च इनोवेशन एंड ट्रेनिंग ऊपर फोकस्ड ए जो पार्टनरशिप टा हैला तार एम कोन aim is to boost the defense preparedness technological self reliance and simulation based training of the armed forces india ebe focus karuchi on indigenizing defense technologies missiles rockets and all and to enhance the national security जो इंडियन आर्मी रहिला से एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन को सीक करूची टू इनकॉर्पोरेट टेक इनटू इट्स ऑपरेशंस तो आईआईटी भुवनेश्वर रो गोटे डेडिकेटेड वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अछि जहा कि गोटे की रोल प्ले करिवो ए कोलैबोरेशन रे आमे भी बहुत थोड़ा डिस्कस कले कि ऑगमेंटेड रियलिटी कोन एंड वर्चुअल रियलिटी कोन augmented reality होची it overlays digital content into the real world जेमति कि स्मार्ट हेलमेट हे गला नेविगेशन हे गला से डिजिटल कंटेंट को ओवरले करे onto the real world virtual reality कोन immerses users in a fully virtual environment for example combat training simulations और ये जो दीटा जाको टेक्नोलॉजी जो रहिला they are increasingly used in military training mission planning and maintenance operations artificial intelligence कोन जो machines माने रहिले से माने human intelligence को mimic करंती एथिरे से माने pattern को recognize करंती decision make करंती and autonomous decision making and autonomous system रे भी से माने help करंती defense रे AI is critical for predictive analytics surveillance threat detection and autonomous weapon systems robotics कोन एटा गोटे it involves design and use of robots माने को यूज करा जाय कि जेमति कि टास्क रहिला surveillance bomb disposal logistics in conflict zones एथि पई कि robots माने को यूज करा जाय robotics integrated with AI is crucial for force multiplication and combat support ऑब्जेक्टिव कोन है कोलैबोरेशन रो कि सिमुलेशन बेस्ड डिफेंस ट्रेनिंग को स्ट्रेंथन करा जिवो यूजिंग ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म्स जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करा जिवो इन फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज देन डिफेंस कैपेबिलिटी को एनहांस करा जिवो थ्रू इंडिजिनियस इनोवेशन इंस्टीट्यूशनल रोल्स जेमति आईआईटी भुवनेश्वर रो रहिछि इंडिविजुअल रोल ये कोन करिवो इट विल कंट्रीब्यूट थ्रू इट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआर और वीआर रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेस प्रोवाइड करिवो फैकल्टी एक्सपर्टीज को एक्सेस प्रोवाइड करबा स्टूडेंट टैलेंट को भी मध्य एक्सेस प्रोवाइड करा जिवो इंडियन आर्मी सिमुलेटर डेवलपमेंट डिवीजन एसडीडी रो कोन रोल रहिछि ये रियल वर्ल्ड एक्सपोजर प्रोवाइड करिवो टू मिलिटरी सिमुलेशन एनवायरनमेंट्स opportunities provide karibo for testing feedback and application of developed technologies what is the significance first of all mu kahili eta jo atmanirbhar bharat self reliant in india it is a push towards it in defense technology academia au defense application bhitare jo gap ta exist kurchi taku bridge karibo ba close kariba ku try karibo then new generation को train करिवो of engineers with a focus on national security long term knowledge exchange को encourage करिवो and strategic innovation को भी encourage करिवो duration and scope कोन ए जो MOU टा sign हेजी it will remain in force for 5 years 5 years जाय एटा force रे रहिबो long term collaboration पई कि एटा design हेजी joint research and development and capacity building नेक्स्ट आमे जिबा ओडिशा सेवा रत्न सम्मान 2025 ऑनरिंग सर्विस एंड एक्सेलेंस
न्यूज रे कोन पई अछि एडा मिसलेनियस टॉपिक ओडिशा सेवारत्न सम्मान 2025 सेरेमनी एबे रिसेंटली हेल्ड हला सूचना भवन रे जोथरे 35 डिस्टिंग्विश्ड इंडिविजुअल मानको ऑनर करा जाईची एटा कहा जाईची ब्राइट ओडिशा फाउंडेशन द्वारा ऑर्गेनाइज करा जाईची द इवेंट रिकॉग्नाइज्ड आउटस्टैंडिंग सर्विस एंड कंट्रीब्यूशंस अक्रॉस द डाइवर्स फील्ड्स अब जो अवार्ड टा एटा सोशल कमिटमेंट को सेलिब्रेट करा जाए and inspire citizens to contribute to more inclusive and progressive Odisha. Excuse me. ओडिशा सेवारत्न सम्मान एटा गोटे स्टेट लेवल सिविलियन ऑनर जोड़ा कि कन्फर करा जाए बाय अ प्राइवेट फाउंडेशन ब्राइट ओडिशा फाउंडेशन एटा रिकॉग्नाइज करे नॉट ओनली प्रोफेशनल अचीवमेंट बट आल्सो कंट्रीब्यूशंस टू सोसाइटी पब्लिक सर्विस कल्चर स्पोर्ट्स ह्यूमन राइट्स एटा प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन बढ़ाए the award has prestige and recognition due to diversity and quality of its recipients kind of diverse area ru recipients mane nominate huanti and tangu award diya jaye field of recognition sports re diya jaye for excellence and inspiration in athletics and national representation cinema and performing arts re diya jaye recognizing contributions to Odia film and entertainment education and youth empowerment ओडिया फिल्म इंडस्ट्री रो गोटे जने एक्टर डॉक्टर अमृत पटजोशी रिनाउंड साइकियाट्रिस्ट एंड मेंटल हेल्थ एडवोकेट धरणीधर नायक जने सीनियर एडवोकेट अजय बहादुर सिंह एजुकेशनिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ आकाश इंस्टीट्यूट सब्यसाची सतपथी जने नोटेबल फैशन डिजाइनर एंड टीवी पर्सनालिटी हरप्रसाद महापात्र मीडिया कंसल्टेंट अभय पटनायक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट स्वप्नपति जने एक्ट्रेस एंड सोशल वर्कर जहाँ भी नेम रहिला जस्ट गो थ्रू द नेम्स 2 to 3 टाइम्स एंड क्वेश्चन देखले आपे मन पड़ जिवो ओके एबे हमें नेक्स्ट जिबा ओडिशा होल्ड्स स्टेक होल्डर मीटिंग ऑन ड्राफ्ट एनर्जी कोड इकोनॉमिक्स रो टॉपिक न्यूज रे कोन पई अछि जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी रहिला ओडिसा रो थ्रू द इंजीनियर इन चीफ इलेक्ट्रिसिटी कम पीसीईआई फर्स्ट स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हेल्ड करा जायछि ऑन ड्राफ्ट ओडिशा एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड OESC BC ए जो मीटिंग टा करा जायछि आर एम होछि टू गैदर फीडबैक फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर स्टेक होल्डर्स टू टेलर द कोड टू ओडिशा's climate and regional condition enable smooth integration into building bylaws ensure effective implementation बैकग्राउंड कोन ए जो OECSBC रहला एटा गोटे अपग्रेडेड वर्जन आगुरु कोडा एग्जिस्ट करथलो आगुरु ओडिशा एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड OECBC 2022 रे एग्जिस्ट करथला इट इज द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ दिस वन OECBC जोटा 2022 रे थिला अप्लाई टू न्यू कमर्शियल बिल्डिंग्स विथ कनेक्टेड लोड ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 किलोवाट कॉन्ट्रैक्ट डिमांड ग्रेटर देन और इक्वल टू 122 kVA built up area greater than or equal to 1000 square kilometer ये जो upgraded करा जाइछि ताकू it introduces sustainability compliance parameter भी include कर दिया जाइछि so OECBC को upgrade कर दिया जाइछि OECSBC करा जाइछि to promote climate responsive energy efficient construction in both commercial and residential sectors energy conservation building code कोन ECBC एटा कहा द्वारा डेवलप करा जाइछे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा डेवलप करा जाइछे बी एटा मिनिमम एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड प्रोवाइड करे फॉर व्हाट फॉर बिल्डिंग्स इन इंडिया और एम कोन एम होची रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन इन कमर्शियल बिल्डिंग्स ड्यूरिंग ऑपरेशन ओडिशा एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड कोन एटा गोटे स्टेट स्पेसिफिक वर्जन ऑफ द ECBC जोटा कि बी द्वारा डेवलप करा जाइछे गोटे नेशनल वर्जन एटा अडॉप्ट करा जाइछे ओडिसा रा क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट नीड्स पाई की एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन ऊपर एटा फोकस करे मटेरियल यूज एंड सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस ऊपर भी फोकस करे विल सर्व एज ए गाइडलाइन फॉर अप्रूवल प्रोसेसेस इन अर्बन प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन पई एटा गोटे गाइडलाइन हिसाब रे प्रूव होबो ओडिशा इको निवास संहिता OENS एटा गोटे स्टेट अलाइन वर्जन ऑफ द इको निवास संहिता ENS जोटा कि इंडिया रो गोटे रेसिडेंशियल बिल्डिंग एनर्जी कोड एटा थर्मल कंफर्ट ऊपर फोकस करे एनर्जी सेविंग्स ऊपर फोकस करे इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स
जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रहा SDG 11 एंड SDG 13 ता सहित अलाइन करे ए पर्टिकुलर ओडिशा इकोनिवास संहिताटा एंड इंडियास क्लाइमेट कमिटमेंट सहित भी अलाइन करे अंडर द पेरिस एग्रीमेंट. ऑब्जेक्टिव कौन एनर्जी एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी प्रमोट करिवो इन बिल्डिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन. कस्टमाइज स्टैंडर्ड्स फॉर ओडिशा ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट. अर्बन बिल्डिंग बायलॉज को इंटीग्रेट करिवो एंड द बिल्डिंग अप्रूवल प्रोसेस को इंटीग्रेट करिवो. सस्टेनेबल डेवलपमेंट फैसिलिटेट करिवो विथ रिड्यूस्ड एनर्जी कंजम्पशन एंड एमिशंस. एडवांटेज कौन ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस को एनकरेज करिवो अक्रॉस द स्टेट्स. देन एनर्जी बिल्स को रिड्यूस करिवो, कार्बन एमिशन रिड्यूस करिवो, लोकल मटेरियल रो यूज को प्रमोट करिवो, पैसिव कूलिंग प्रमोट करिवो एंड एफिशिएंट अप्लायंसेस प्रमोट करिवो. ओडिशा को हेल्प करिवो इन शिफ्टिंग टुवर्ड्स एनर्जी इंडिपेंडेंस एंड क्लाइमेट एक्शन गोल को सपोर्ट करिवो. चैलेंजेस कौन कौन रही एनफोर्समेंट रे चैलेंजेस रही एंड मॉनिटरिंग रे चैलेंजेस रही एट द म्युनिसिपल लेवल. कैपेसिटी बिल्डिंग रो दरकार होची अमंग द अर्बन लोकल बॉडीज एंड द आर्किटेक्ट्स. इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई है पारे. इनिशियल कॉस्ट कंसर्न्स रही फॉर प्राइवेट बिल्डर्स डिस्पाइट लॉन्ग टर्म सेविंग्स. पब्लिक अवेयरनेस अबाउट एनर्जी कोड्स एटा स्टिल एबे लिमिटेड अछि. वे फॉरवर्ड कौन हबा दरकार फॉर दिस कि OECS-BC को फाइनलाइज करा जाऊ और OENS को फाइनलाइज करा जाऊ आफ्टर मल्टी राउंड स्टेक होल्डर फीडबैक. बट फीडबैक नेला परे फाइनलाइज करा जाऊ. इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को बिल्ड करा जाऊ फॉर एनफोर्समेंट एट द ULBs आई मीन पंचायत लेवल्स. देन अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च करा जाऊ. वर्कशॉप्स रे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करा जाऊ फॉर आर्किटेक्ट प्लानर्स एंड बिल्डर्स. इंसेंटिव्स इनकॉर्पोरेट करा जाऊ फॉर ग्रीन बिल्डिंग कंप्लायंस, फास्टर अप्रूवल्स एंड द टैक्स रिबेट्स. NIT Rourkela develops plant-based nanomaterial to combat antibiotic resistance. GS paper 3 रो टॉपिक साइंस एंड टेक प्रिलिम्स एंड मेंस दीटा पाई इंपोर्टेंट न्यूज रे एथि पाई अछि काहेकि ना रिसर्चर्स जो रहिले NIT राउरकेला रे से माने गोटे इको फ्रेंडली एंटीबैक्टीरियल एजेंट को डेवलप करचंती यूजिंग मेडिसिनल प्लांट एक्सट्रैक्ट्स. आ ए जो एजेंट टा एटा ग्रीन सिंथेसाइज्ड जिंक ऑक्साइड नानो पार्टिकल्स ऊपर बेस्ड एम्ड एट टैकलिंग एंटीमाइक्रोबायल रेजिस्टेंस AMR. आ ये स्टडी टा पब्लिश करा जाई प्रेस्टिजियस जर्नल सर्फेसेस एंड इंटरफेसेस. बैकग्राउंड एंटीमाइक्रोबायल रेजिस्टेंस कोन एटा गोटे ग्लोबल हेल्थ थ्रेट जोटा कि ओवर यूज एंड मिसयूज. जेमति जो एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन रहला ताकू जदी हमें ओवर यूज दरकार जदी नथिबो एंड मिसयूज करा जिवो ताहले बॉडी रे एंटीमाइक्रोबायल रेजिस्टेंस डेवलप करिवो जोटा कि सुपर बग्स को लीड करिवो लीडिंग टू सुपर बग्स दैट कन्वेंशनल ड्रग्स कैन no longer kill. There is a global race to find alternative, safe and sustainable antimicrobial solutions. Nanotechnology एटा गोटे promising route offer करिछि through nano sized material with potent antimicrobial activity. Relevant concepts explain. Antimicrobial resistance AMR एटा सेतेबेले हुए जेतेबेले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहिले बैक्टीरिया फंजाई वायरसेस से माने एंटीमाइक्रोबायल ड्रग्स थारु से माने रेजिस्टेंट हे जानती. आ ए रेजिस्टेंस ता कोन पई डेवलप हुए जदी हमें ओवर यूज करबा कहारो ओवर यूज और मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स जोडा तापर सेटा कोन हबो से लीड टू सुपर बग्स. तो जो मेडिसिन आगुरु काम करूतला से मेडिसिन रे से मेडिसिन काम करबनी. सो इट विल लीड टू ट्रीटमेंट फेलियर्स, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस एंड इंक्रीज्ड मोर्टालिटी. एटा WHO द्वारा रिकॉग्नाइज करा जायछि as top 10 ग्लोबल पब्लिक हेल्थ थ्रेट्स. जिंक ऑक्साइड नानो पार्टिकल ZNO-NP एटा अल्ट्रा स्मॉल पार्टिकल विथ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, किल बैक्टीरिया बाय जिंक आयंस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, डिसरप्टिंग बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन्स. एगुडा सब करी कि इट विल किल द बैक्टीरिया. ट्रेडिशनली एटा टॉक्सिक केमिकल्स रो सिंथेसाइज करा जाए जोडा कि एनवायरमेंटल एंड हेल्थ रिस्क फर्दर इट विल पोज एनवायरमेंटल एंड हेल्थ रिस्क. फाइटोकोरोना और ग्रीन एटा होची कि प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट को यूज करा जाए कि नानो पार्टिकल्स को क्रिएट करिबा. फॉर एग्जांपल मैरीगोल्ड, मैंगो बा यूकेलिप्टस एभली प्लांट्स को यूज करा जाए कि जो नानो पार्टिकल्स को क्रिएट करा जाए. फॉर्म्स ऑफ फाइटोकोरोना एटा गोटे नेचुरल स्टेबलाइजिंग लेयर अराउंड व्हाट अराउंड नानो पार्टिकल्स मेड ऑफ फाइटोकेमिकल्स. आर बेनिफिट कोन एटा इको फ्रेंडली, नॉन टॉक्सिक, कंट्रोल एंड सस्टेन्ड रिलीज ऑफ एक्टिव एजेंट्स. की फीचर्स कोन ए रिसर्च रो एटा डेवलप करा जाय छि बाय प्रोफेसर सुमन झा, डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ साइंसेस NIT राउरकेला.
रिसर्च स्कॉलर्स रे किए इंक्लूड अछंती कुमारी शुभम, सोनाली जेना एंड मोनालिसा ओझा। की इनोवेशंस कोन? प्लांट एक्सट्रैक्ट को यूज करा जाउची टू रिड्यूस द जिंक सॉल्ट्स इनटू नानो पार्टिकल्स। ट्रिपल फंक्शन ऑफ एक्सट्रैक्ट्स होची रिडक्शन एजेंट, स्टेबलाइजर हिसाब रे काम करिवो, फाइटोकोरोना कंट्रोल्ड रिलीज फैसिलिटेटर हिसाब रे भी काम करिवो। एप्लीकेशन फील्ड्स कोडी कोडी एटा अप्लाई करा जाय परिबो, हेल्थ केयर सेक्टर रे अप्लाई करा जाय परिबो, सैनिटेशन एंड फूड प्रिजर्वेशन रे भी अप्लाई करा जिवो। इन केस जदी ए थर्ड पॉइंट देखा जाउ नथिबो, थर्ड पॉइंट रे लिखा है फूड प्रिजर्वेशन। ओके, एडवांटेज कोन? एटा इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल एंटीमाइक्रोबायल एजेंट। एटा डिपेंडेंसी रिड्यूस करूची ऑन सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स। एटा नॉन टॉक्सिक, अफोर्डेबल, स्केलेबल प्रोडक्शन हे परिबो। इंडिया रो रिच बायोडायवर्सिटी लेवरेज करूची फॉर हेल्थ केयर इनोवेशन, सपोर्ट्स आत्मनिर्भर भारत थ्रू सेल्फ रिलायंट बायोटेक सॉल्यूशंस। चैलेंजेस कौन कौन रही? फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलेबिलिटी होची गोटे चैलेंजेस एंड कमर्शियल प्रोडक्शन भी गोटे चैलेंज, जो थ्रे कि फर्दर रिफाइनमेंट आनिबा जरूरी। क्लिनिकल ट्रायल्स दरकार पड़ुची एंड रेगुलेटरी क्लियरेंस दरकार पड़ुची। पब्लिक हेल्थ एंड इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन is necessary of nanotech based solutions is still evolving. बायोसेफ्टी स्टैंडर्ड्स को एंश्योर करा जिबा दरकार इन एसेंशियल बिफोर मास डिप्लॉयमेंट। वे फॉरवर्ड कोन हबो? फर्दर रिसर्च अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एटा सपोर्ट कर इंटीग्रेशन इनटू नेशनल स्ट्रेटजीज लाइक नेशनल एक्शन प्लान ऑन एएमआर, आयुष एंड बायोटेक मिशंस। पेटेंटिंग को एनकरेज करिवो, कमर्शियलाइजेशन को एनकरेज करिवो थ्रू इनोवेशन फंड्स एंड स्टार्टअप इंक्यूबेशन। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को फोस्टर करिवो फॉर टेस्टिंग एंड स्केलिंग ग्रीन नैनोटेक सॉल्यूशंस। नाउ लेट्स सॉल्व द एमसीक्यू। Which of the following mechanism does not contribute to antimicrobial resistance in bacteria? First statement कहला efflux pumps expelling antibiotics from the bacterial cell, enzymatic degradation of antibiotics, mutation in target sites of antibiotics, increased permeability of the bacterial cell membrane. कौन अब आंसर? Giving you 15 seconds. Okay. Next, Amo Subahak scheme, interest-free taxi loans for women in Odisha. GS2 social justice, prelims or mains. Why in news? News रे कौन पाई अछि? Odisha government launch करुछि Amo Subahak scheme aimed at empowering women through the interest-free loans for purchasing four-wheel taxis. एटा अनाउंस करा जायछि कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर विभूति भूषण जेनाଙ୍କ द्वारा। स्कीम टा इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को टार्गेट करूछि, जेंडर इक्वालिटी को टार्गेट करूछि एंड सेफर मोबिलिटी ऑप्शन को टार्गेट करूछि। बैकग्राउंड कोन? स्कीम टा एक्सटेंशन ऑफ द सुवाहक इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन डिसेंबर 2023 रे। 2023 रे जो सुवाहक इनिशिएटिव टा लॉन्च हेतला, स्कीम टा तारा गोटे एक्सटेंशन जोटा कि वुमेन मानकर इंक्लूजन को प्रमोट करूछि इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। 6000 वुमेन को दिया जीवन सुभद्रा योजना बेनिफिशियरीज मानको दिया जीवो। लोन डिटेल्स होची इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जीवो अप टू 10 lakhs फॉर अ 4-wheeler टैक्सी। 5 years परे ओवर 5 years रे एटा रिपेएबल। गवर्नमेंट टू बियर 11% एनुअल इंटरेस्ट बर्डन।
जहाँ भी annual interest accumulate हबो गवर्नमेंट तारे 11% दबो रोल आउट प्लान टोटल बेनिफिशियरीज 1100 जन वुमेन अछंती चारिटी फेज रे एटा इंप्लीमेंट हबो फर्स्ट ईयर रे 200 सेकेंड ईयर रे 250 थर्ड ईयर रे 300 एंड फोर्थ ईयर रे 350 इलेक्ट्रिक व्हीकल इंसेंटिव 2 लाख एडिशनल इंसेंटिव दिया जिवो फॉर चूजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एग्जेम्पशन दिया जिवो फ्रॉम रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फीस एज पर ओडिशा ईवी पॉलिसी फंडिंग मिलिबो एस्टिमेटेड कॉस्ट रही 46.66 crore एंड कोटू फंड हबो मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा भित्तिभूमि उन्नयन योजना द्वारा एटा फंडेड हबो ऑब्जेक्टिव्स कौन रही वोमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करिबो इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट करिबो वुमेन पार्टिसिपेशन एनहांस करिबो इन द फॉर्मल इकोनॉमी एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एनकरेज करिबो मोबाइल सेफ्टी को इंप्रूव करिबो एंड एक्सेस फॉर वुमेन को वुमेन मानकर एक्सेस को इंप्रूव करिवो इन अर्बन एंड द रूरल एरियाज एडवांटेजेस कोन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बूस्ट करिवो एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बूस्ट करिवो हेल्प्स ट्रेन्ड वुमेन ड्राइवर्स बिकम ओनर्स ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स गोटे विजिबल फीमेल प्रेजेंस को से क्रिएट करिवो इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जोटा कि सेफ्टी को फर्दर इंप्रूव करिवो ऑफ वुमेन पैसेंजर्स ग्रीन मोबिलिटी गोल्स को सपोर्ट करिवो ईवी इंसेंटिव्स को सपोर्ट थ्रू ईवी इंसेंटिव्स जेंडर डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करिवो इन लोन्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंजेस कौन रही कि टाइमली रोल ताको मिलिबो कि नाही सेटा गोटे प्रॉब्लम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी गोटे प्रॉब्लम रीपेमेंट लोन तो मिल गला तार रीपेमेंट प्रॉब्लम मेंटेनिंग द रीपेमेंट डिसिप्लिन ओवर द 5 इयर्स सेफ्टी सिक्योरिटी ऑपरेशनल चैलेंज भी रही इन कमर्शियल टैक्सी ऑपरेशंस आफ्टर लोन सपोर्ट भी दरकार फॉर व्हीकल मेंटेनेंस बिजनेस ट्रेनिंग एटसेट्रा मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन रे प्रॉब्लम आसी पारे ऑफ रियल आउटकम्स वर्सेस टारगेट्स वे फॉरवर्ड सपोर्ट एंड मेंटोरिंग मेकानिज्म सपोर्ट सेटअप करा जिबा दरकार फॉर फर्स्ट टाइम वुमेन टैक्सी एंटरप्रेन्योर्स ओडीओपी स्किल इंडिया स्टार्टअप ओडिशा सहित आकु इंटीग्रेट करा जिबा दरकार राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म सहित पार्टनरशिप करा जिबा दरकार एंड लोकल टूरिज्म ऑपरेटर्स मानक सहित पार्टनरशिप करिकी बिजनेस को एनश्योर करा जिबा दरकार इंपैक्ट असेसमेंट को कंडक्ट करा जिबा दरकार कंडक्ट इंपैक्ट असेसमेंट्स टू रिफाइन द इंप्लीमेंटेशन ओवर टाइम पुश फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट वॉश सिस्टम इन ओडिशा जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट रो टॉपिक प्रीलिम्स एंड मेंस न्यूज रे कोन पई अछि COP30 क्लाइमेट समिट इन ब्राजील अहेड ऑफ COP30 क्लाइमेट समिट इन ब्राजील ए प्री COP डायलॉग गोटे हेल्ड एजी इन भुवनेश्वर फोकसिंग ऑन अर्जेंट नीड टू डेवलप क्लाइमेट रेजिलिएंट वॉश रो फुल फॉर्म कोन वाटर सैनिटेशन हाइजीन सिस्टम इन ओडिशा डायलॉग टी हाईलाइट करिछि जो वल्नरेबिलिटी इंक्रीज होची ऑफ वॉश इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू क्लाइमेट इंपैक्ट सच एज एक्सट्रीम रेनफॉल साइक्लोन्स एंड फ्लडिंग इन द स्टेट बैकग्राउंड कोन ओडिशा गोटे क्लाइमेट हॉटस्पॉट जो जहाँ की फ्रिक्वेंटली से अफेक्ट होता है बाय नेचुरल डिजास्टर्स इंपैक्टिंग इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटीज वॉश सर्विसेज जो गुड़ा रहा से गुड़ा हेल्थ एजुकेशन एंड लाइवलीहुड पे बहुत क्रिटिकल एंड इंपोर्टेंट जोटा कि डिसरप्शन फेस करूची ड्यू टू क्लाइमेट चेंज आउ जो डायलॉग टा इंस्टीट्यूट हेची वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द ओडिशा डेवलपमेंट इनोवेशन अलायंस जीवन रेखा परिषद एंड यूनिसेफ ओडिशा आउ जो इवेंट टी हेल्ड हेतला इट एम्ड टू अलाइन द लोकल क्लाइमेट एडाप्टेशन एक्शंस with global climate commitments discussed at the COP30 Conference of Party 30 की हाइलाइट्स कौन रही डायलॉग रो कि गोटे स्ट्रॉन्गर क्लाइमेट एक्शन रो दरकार पड़ुची टू सेफगार्ड द वॉश इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम वर्सनिंग क्लाइमेट इंपैक्ट्स इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करा जिबा ऊपर एम्फासाइज दिया जाइछि एंड कोलैबोरेशन को केमती फोस्टर करा जिबा ता ऊपर मध्ये एम्फासाइज रहिछि अक्रॉस द सेक्टर्स एंड गवर्नमेंट बॉडीज इंटीग्रेशन ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंस इन एक्जिस्टिंग स्कीम्स सच एज जल जीवन मिशन जेजेएम फोकसेस ऑन जोटा कि वाटर सप्लाई ऊपर फोकस करे वसुधा जे कि सैनिटेशन एंड हाइजीन ऊपर फोकस करे इनोवेटिव फाइनेंस मेकानिज्म को केमती यूज करा जाय कि ब्लेंडेड फाइनेंसिंग ग्रीन बॉन्ड्स एंड ब्लू बॉन्ड्स क्रिएट करा जिवो ता ऊपर मध्ये एम्फासाइज करा जायछि कैपेसिटी बिल्डिंग रो इंपोर्टेंस रहिछि एट ग्लोबल लोकल गवर्नेंस लेवल्स जेमती कि अर्बन लोकल बॉडीज हेगले ग्राम पंचायत से हेगले फॉरवर्ड फॉर सस्टेनेबल implementation interdepartmental coordination and data sharing को केमती enhance करा जिवो to strengthen and resilience planning एगुडा एटा भी की highlights भितरु गोटे highlight wash रो full form कोन water sanitation and hygiene and it is essential for public health education socio economic development
क्लाइमेट रेजिलिएंस इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर कौन एटा होची गोटे स्ट्रक्चर बा सिस्टम जोटा कि डिजाइन करा जाय टू विथस्टैंड और क्विकली रिकवर फ्रॉम क्लाइमेट रिलेटेड शॉक जहां भी क्लाइमेट रिलेटेड शॉक रही सेथिरु के ओके एबे आसुथिबो आई होप टिके नेटवर्क प्रॉब्लम थिला मझिरे सक्सेसफुल कम्युनिटी इंटरवेंशंस Odisha advocacy groups recognized alongside similar efforts in Madhya Pradesh and Rajasthan. Child marriages, it will help delaying in child marriages and empower adolescent girls. बाकी एग्जांपल्स रे मेंशन अछि adolescent clubs in Madhya Pradesh, Bharosa centers in Telangana, etc. National stakeholder consultation event. एटा ऑर्गेनाइज करा जायछि सुप्रीम कोर्ट जुवेनाइल जस्टिस कमिटी द्वारा एंड यूनिसेफ इंडिया द्वारा एटा कोइंसाइड करे विथ द इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड एटा को अटेंड करिसंते यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी ओके आउ से जो अन्नपूर्णा देवी जे अटेंड करिसंते तांकर रिमार्क रहिछि हाइलाइटेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ से हाइलाइट करछन्ते कि 854 वन स्टॉप सेंटर्स फॉर वुमेन अक्रॉस इंडिया क्रिएट करा जायछि यूजिंग द निर्भया फंड शेल्टर काउंसलिंग मेडिकल एड लीगल असिस्टेंस एंड सर्वाइव लीगल असिस्टेंस फॉर सर्वाइवल ऑफ वायलेंस से मानको सर्विस दिया जाउछि 56% ऑफ द लीगली अडॉप्टेड चिल्ड्रन लास्ट ईयर इन इंडिया वेयर गर्ल्स इन जोटा कि इंडिकेट करछि गोटे पॉजिटिव शिफ्ट इन सोशल एटीट्यूड्स emphasize करा जाउछि women helpline 181 women help desk at police stations sorry working women hostels and shakti sadhan stress करछि on women safety and empowerment and central to PM Narendra Modi vision of a developed India by 2047 government's integrated approach through the mission Shakti mission Vatsalya and mission Poshan 2.0 targets advancing women safety empowerment and self reliance RSP NIT Rourkela launch Waste to Wealth project. Okay, एटा environment रो गोटे topic. जोटा कि prelims mains दीटा पाई important. First of all, Rourkela steel plant से launch करची Waste to Health project in partnership with NIT Rourkela. आउ ए प्रोजेक्ट रो एम कोन टू प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड वुमेन फार्मर मानकु केमती एनकरेज एम्पावर एंड एनकरेज करा जिवो इन आरएसपीस पेरिफेरल एरियाज माने राउरकेला स्टील प्लांट पेरिफेरल एरियाज रे थ्रू इनोवेटिव ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक्स बैकग्राउंड कोन बैकग्राउंड होची कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी एटा गोटे की ड्राइवर फॉर इंक्लूसिव कम्युनिटी डेवलपमेंट आरएसपी कोलैबोरेशन विथ एनआईटी राउरकेला focuses on converting agricultural waste into valuable resources agricultural waste को केमदी valuable resource रे convert करा जिवो एटा तांकर गोटे main focus and women livelihood को केमदी encourage करा जिवो एटा भी गोटे focus इनिशिएटिव टा अलाइन करूसी इंडिया रो गोल्स जो रहिला प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट आ सहित अलाइन करूची एडवांटेज कोन वुमेन एम्पावरमेंट enhance hobo then skill development बढ़िबो training around 600 women farmers over 3 years जोटा कि तांगर financial independence को enhance करिबो sustainable farming को promote करिबो for example adoption of organic practices such as vermicomposting biofertilizers biopesticides जोटा कि chemical uses को reduce करिबो waste management को enhance करिबो जोटा कि efficient conversion करिबो agricultural waste to useful farming input जोटा कि सर्कुलर इकोनॉमी रो प्रिंसिपल को प्रमोट करिबो फर्दर साइंटिफिक एक्सपर्टीज गोटे एडवांटेज जोटा कि रिसर्च बैक्ड इनोवेशन एनआईटी राउरकेला आनिबो रिसर्च बैक्ड इनोवेशन फ्रॉम एनआईटी राउरकेला टू ग्रासरूट फार्मर्स सॉइल हेल्थ इंप्रूव हबो
soil testing facilities upgrade करा जिवो, in better crop planning हबो, sustainable land management हबो, livelihood diversification हबो, crop diversification, kitchen garden development द्वारा food security and income sources improve हबो. Disadvantages कौन? Scaling up. एटा benefit को extend करिवो to more farmers requires additional resources and outreach efforts. Resistance to change. Farmers से माने hesitate करि पारंती to change, to adopt new organic method due to uncertainty and traditional practices. Sustainability issue आसी पारे जेमदी continuously technical and financial support मिलिबो कि नहीं सेटा beyond initial project timeline beyond रे दरकार टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट एटा कंटिन्यूअसली दरकार तो सेटा कंटिन्यूअसली मिलिबो कि नहीं तो सस्टेनेबिलिटी गोटे इशू एठी मार्केट लिंकेजेस रे इशू आसी पारे एफिशिएंट मार्केटिंग चैनल्स रो लैकिंग रहिची फॉर ऑर्गेनिक प्रोड्यूस मे अफेक्ट इकोनॉमिक वायबिलिटी रेलेवेंट कांसेप्ट किछि एटी एक्सप्लेन हिची फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी कोन business initiatives that contribute to societal and environmental well-being beyond profit motives. जो business corporations बा initiatives से माने societal and environmental well-being पाई की जोड़ा contribute करंती जो थिरु तांको किछि प्रॉफिट मिलेनी बस सेटा तांकर गोटे कंट्रीब्यूशन सेटा को जाय कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑर्गेनिक फार्मिंग होची फार्मिंग बा एग्रीकल्चर जो कि कौन से सिंथेटिक केमिकल्स यूज करा जाए नहीं से इकोलॉजिकल बैलेंस को प्रमोट करा जाए और सॉइल हेल्थ को प्रमोट करा जाए वर्मी कंपोस्ट हो यूजिंग अर्थवर्म्स टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट ऑफ फॉर सॉइल फर्टिलिटी Gridco signs renewable energy banking agreements to boost Odisha's green energy transition. GS3 environment prelims and mains my important news रे कौन पाई रहले Gridco ये renewable energy banking agreements sign करची with renewable e-fuels private limited 50 megawatt and Ultratech Cement limited 6.25 megawatt. ये जो signing टा एटा it took place in presence of Odisha Deputy Chief Minister and Energy Minister Kanakvartan Singh Deo. अब ये जो move टा हेची एटा support करूची ओडिशा रा transition towards renewable energy and development of green hydrogen economy. Background कौन ओडिशा 14 टा green hydrogen बा ammonia project को approve already करी सारची with investment of around 2 lakh crores. Expected to generate 22,000 jobs. Odisha Renewable Energy Policy 2022 and OERC 2023 regulation एटा promote करुचंदी access to green energy and renewable power banking. Renewable energy generation जिन solar हैला wind हैला एटा intermittent and weather ऊपर dependent. So banking helps store excess energy for later use. Renewable energy banking ये consumer मान को allow करे to deposit surplus green power जोटा बढ़ी जाउची green power ताकू डिपोजिट करिबारे एंड जेतेबेले जनरेशन लो थिवो जेहेतु एटा वेदर ऊपर डिपेंडेंट सेतेबेले ताकू विथड्रॉ करिकि से माने ताकू यूज करि परिबे रिन्यूएबल एनर्जी बैंकिंग कोन एटा गोटे मेकानिज्म जोड़ा कि कंज्यूमर मानन को सरप्लस रिन्यूएबल एनर्जी स्टोर करिबारे हेल्प करे जनरेटेड थ्रू solar or wind with the utility and withdraw it later. Green hydrogen कौन हाइड्रोजन जोटा कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को यूज करा जाए कि प्रोड्यूस करा जाए ताकू आ जाए ग्रीन हाइड्रोजन considered a clean fuel for industrial and transport use. Green ammonia कौन ग्रीन अमोनिया होची जो अमोनिया ग्रीन हाइड्रोजन को यूज करा जाए कि प्रोड्यूस करा जाए ताकू कहा जाए ग्रीन अमोनिया और तार यूज कोडी होची फ्यूएल और फर्टिलाइजर जोटा कि डिकार्बोनाइजेशन रे कंट्रीब्यूट करूची. रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन को फैसिलिटेट करूची. एडवांटेजेस भितर इट फैसिलिटेट्स रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन. जो बैंकिंग रहिला रिन्यूएबल एनर्जी बैंकिंग
it helps balance the intermittent supply and demand, enhancing the grid stability. Industrial growth को support କରୁଛି, ଯେମିତି କି agreement with large industries like Ultratech Cement, ଏଟା sustainable industrial energy consumption को promote କରୁଛି. Green hydrogen economy को boost କରୁଛି. Investment in cutting edge green hydrogen and ammonia project को encourage କରୁଛି and positioning Odisha as a leader. Job creation रे भी help କରୁଛି, large scale investment होची, so are expected to create thousands of employment and opportunities. Policy driven growth गोटे advantage, it aligns with the state's progressive renewable energy policies, facilitating cleaner energy adoption. डिसएडवांटेज कौन रही, ग्रिड मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी रही, रिन्यूएबल एनर्जी बैंकिंग सेटा कौन रिक्वायर कर, एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोऑर्डिनेशन रिक्वायर कर टू मैनेज द एनर्जी फ्लो एफिशिएंटली. इन्वेस्टमेंट इंटेंसिटी रे प्रॉब्लम अच्छी, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट दरकार फॉर रिन्यूएबल एंड ग्रीन hydrogen projects, weather upare dependent. Despite banking, renewable energy generation remains vulnerable to climate variability. Technology और skill रे gap रही, skilled workforce ना, advanced technology रे भी lacking रही for green hydrogen production and energy storage. Way forward कौन हबा दरकार, infrastructure strengthen हबा दरकार, जेमती smart grids, energy storage, advanced metering system etc. Skill development करा जिबा दरकार, workforce मानकु train करा जिबा दरकार in green hydrogen technologies, renewable energy management and maintenance. Private sector participation को encourage करा जिबा दरकार. Facilitate the policies and incentives to attract more industries and startups in green energy sectors. Expand policy frameworks. Continuously policies को upgrade करा जिबा दरकार, innovation को encourage करा जिबा दरकार, renewable energy को scale करा जिबा दरकार, and green hydrogen project को भी scale करा जिबा दरकार. Promote regional collaboration. Collaborate with neighboring states for grid balancing and shared renewable resources. Solve the MCQ. Which of the following is not considered a form of green energy? Solar power, wind energy, coal based thermal power বা geothermal energy. आ भितरु कोउटा गोटे green energy नुह. I am giving you 10 seconds. Answer and brief explanation will be discussed in the next class. So that is it for today. आज हमें जहाँ जहाँ भी पढ़िले, आई होप समस्ते कॉपी पेन रे पॉइंटर्स नहीं थिबे, which will be very helpful before prelims examination for a quick revision. बाकी स्लाइड रो पीडीएफ तो आपण मन को मिली जिबा कमेंट सेक्शन रे. आ जहाँ भी एटी एमसीक्यू एज अ टास्क मु देली, जो माने लाइव चैट रे कमेंट करछदी वेरी गुड. जो माने लाइव सेशन अटेंड करि नांदी से माने रिकॉर्डेड देखि परिबे एंड कमेंट सेक्शन रे ताको आंसर करि परिबे, एंड तार आंसर एंड एक्सप्लेनेशन एज यूजुअल मु नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करबी. ठीक अछि, थैंक यू.